Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Mumtaz Sultan, your biology teacher. Today we will discuss the topics development of seed, structure of seed in detail. Development of seed. After fertilization in female gametophyte, zygote divides repeatedly by mitosis. After fertilization in female gametophyte, how zygote is formed? Zygote is formed by the fusion of sperm and egg. Due to the fusion of sperm and egg, single cell is formed. This is called zygote. And then this single cell divides repeatedly by mitosis and develops into an embryo. And this embryo, the embryo is also called baby plant, or it is an immature plant. Stage, ovule changes into seed. At this stage, ovule changes into seed. Fertilization occurring ovule. And after the formation of embryo, ovule changes into seed. This completes the process of sexual reproduction in plants. Fertilization of germination of pollen grains, zygote formation, embryo formation. Pollen grain transferred to stigma of the carpel. Pollen grain starts forming pollen tube. Pollen tube enter into the ovary, then into the ovule, where sperm fuses with the egg and form a single cell called zygote. Sperm fuses with the egg and form single cell called zygote. Zygote formed by the fusion of sperm and egg, and this single cell is called zygote. Repeatedly undergo mitosis and form embryo. This embryo is also called a baby plant, or you can say this is an immature plant embryo. And outer wall of the ovule changes into seed coat. This is also called integument. Then flower loses all the leaves. Ovary increases in size. These are the seeds, and ovary increases in its size and changes into fruit. Evolution of seed. Evolution of seed has been proved as an important step in the success and spread of flowering plants. Why flowering plants are successful? Flowering plants are successful due to the presence of seeds as compared to non-flowering plants, seedless plants like mosses and ferns, because mosses and ferns have no seeds. Mosses and ferns produce spores. Now we will discuss the structure of seed. Angiosperm seeds consist of three distinct parts. Angiosperm flowering plants, you can say flowering plant, consist of three distinct parts.
seed coat develop from the wall of ovule. Seed coat develop from the wall of ovule, which is also called integument. Next, embryo, baby plant, formed from the zygote by the division of zygote. This single cell divided by the process of mitosis and form embryo or baby plant. Endosperm tissue formed from the endosperm nucleus. How endosperm nucleus, what is endosperm nucleus? Endosperm nucleus is formed by the fusion of polar nuclei, which is diploid, and the sperm, which is haploid, and form triploid nucleus. This is called endosperm nucleus. And then endosperm nucleus form endosperm tissue. Similarly, zygote form embryo by the process of by divisions. कौन सी divisions? Mitosis. And endosperm nucleus form endosperm tissue. तो कितने मेन पार्ट्स हैं सीड्स के? 3 main parts. These are seed coat, embryo and endosperm. अब इन 3 parts को हम डिस्कस करते हैं बारी बारी. This is seed coat, this is embryo, and these are the cotyledons और endosperm tissues जो स्टोर था फूड, स्टोर फूड है ग्रोइंग प्लांट, वो किस में स्टोर हो जाता है? बाजू का कॉटिलिडन्स में जो है ना, उस एंडोस्पर्म को एंडोस्पर्म टिश्यू में से फूड को एब्जॉर्ब करके कॉटिलिडन्स स्वेल हो जाते हैं और फिर ये कॉटिलिडन्स फूड प्रोवाइड करते हैं थ्रू द डेवलपिंग प्लांट. आप कॉटिलिडन्स को स्मॉल लीव्स भी कह सकते हैं. ये देख सकते हैं आउटर वॉल, दिस इज कॉल्ड आउटर वॉल ऑफ द ओव्यूल. दिस इज आल्सो कॉल्ड इंटेगुमेंट. ये किस में चेंज हो जाएगी? सीड कोट. दिस इज एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के 3 पार्ट्स हैं, ये देख लें. पहले ये वाला है लोअर पार्ट. दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विद द, दीज आर द कॉटिलेडन्स. ये 2 कॉटिलेडन्स हैं. दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलेडन्स विद द एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक. दिस इज द एम्ब्रियोनिक स्टेम. ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है. इससे जो नीचे वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल. और अपर पार्ट जो है, ये छोटा सा आपको पार्ट नजर आ रहा है, अपर पार्ट, दिस इज कॉल्ड एपिकोटाइल. और ये रेडिकल है और ऊपर जो है प्लोम्यूल. और ये पूरा क्या है? एम्ब्रियो. और ये जो है ये एंडोस्पर्म टिश्यू है. ये आपको नजर आ रहा है, ये सारा एंडोस्पर्म टिश्यू. दिस इज एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म टिश्यू, एंड दिस इज सीड कोट. और ये बाहर जो है, दिस इज फूड. सीड कोट, outer covering of the ovule or integument. Integument originally surrounding the ovule. Integument originally surrounding the ovule develops into seed coat. It develops from the wall of ovule. This is the wall of ovule. It may be thin or thick layer. It may be thin or thick layer. It may be a paper thin layer. For example, in peanuts. Peanuts में बिल्कुल thin layer होती है seed coat. Or thick and hard. For example, in coconut. Coconut में क्या होती है? Thick and hard. Function of the seed coat. It protects embryo from mechanical injury and from drying out. Seed coat
एम्ब्रियो को ड्राई होने से बचाता है, एक मैकेनिकल इंजरी से बचाता है और दूसरा ड्राई होने से। अगर ये एम्ब्रियो ड्राई हो जाएगा तो इसकी डेथ हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि सीड कोट के ऊपर आपको क्या क्या नजर आता है। देर इज अ स्कार ऑन सीड कोट। सीड कोट पे एक छोटा सा निशान होता है कॉल्ड हाइलम। इट इज वेयर सीड इज अटैच टू द ओवरी वॉल। Secondly, micropyle. This is the small opening through which the pollen tube entered the ovule. ये वो वाली ओपनिंग है, सेम ओपनिंग है माइक्रोपाइल, स्मॉल ओपनिंग है जहां से पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर हुई थी। एट वन एंड ऑफ हाइलम इज माइक्रोपाइल एंड हाइलम के साथ ही माइक्रोपाइल होता है। और सीट अब इसको किसके लिए यूज करेगा? uses this micropyle for the absorption of water. अब सीड को जब भी पानी के अंदर डालेंगे तो सीड का क्या करता है? वाटर एब्सॉर्ब करता है। और वो वाटर किस जगह से एब्सॉर्ब करता है? फ्रॉम माइक्रोपाइल। यू कैन सी दिस इज सीड और ये एक स्कार है, दिस इज कॉल्ड हाइलम। और ये एक छोटी सी ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। एंड माइक्रोपाइल seed uses this micropyle for the absorption of water. ये सारा सीड कोट के बारे में था कि सीड कोट कहाँ से डेवलप होता है। फ्रॉम द आउटर वॉल ऑफ, दिस इज फ्रॉम द आउटर वॉल ऑफ द ओव्यूल विच इज आल्सो कॉल्ड इंटेगमेंट। और ये थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है। और ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड ड्राइंग आउट। और इसी तरह इसके ऊपर क्या चीज है? एक निशान है, स्कार इज प्रेजेंट एंड दिस स्कार इज कॉल्ड हाइलम। और दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ये कौन सी जगह है? दिस इज द प्लेस वेयर सीड इज अटैच विद द ओवरी वॉल। जहां पे सीड ओवरी वॉल के साथ अटैच होता है, इसको कहते हैं। और सेकंड इज स्मॉल ओपनिंग इज प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। नेक्स्ट part is called embryo. Next part of the seed is called embryo. This is embryo. You can see here embryo. Embryo is an immature plant. Immature plant है, इसकी रेडिकल भी है जिससे रूट बनेगी, प्लोम्यूल भी है जिससे शूट बनेगी, और इसके दो लीव्स भी हैं जिनको कॉटिलेडन्स कहते हैं। It consists of radical, plomule, टू कॉटिलेडन्स। इन मोनोकॉट्स होंगे तो वन कॉटिलेडन और डाइकॉट्स में टू कॉटिलेडन्स। इसमें एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। कोटाइल is the point of attachment. Epicotyl is the ये है point of attachment. ये cotyledon की point of attachment है this embryonic stem के साथ। ये cotyledons जो हैं यहाँ से, ये एक cotyledon इधर से और एक cotyledon इधर से अटैच है। These are the point of attachment. Point of attachment with the embryonic stem. This is the embryonic stem. इसका जो point of attachment से ऊपर वाला part है, this is called epicotyl. और point of attachment with जो cotyledon के साथ है, इसका lower part जो है hypocotyl. और यहाँ पे जो एंड पे है इसको क्या कहेंगे? रेडिकल। उससे रूट बनेगा और प्लोम्यूल से क्या बनेगी? ये ऊपर जो है ये मेरिस्टेमेटिक होता है और ग्रो करता है और इससे शूट बनती है। ठीक है। एम्ब्रियो इज एन इमेच्योर प्लांट। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेडिकल and a plomule and one or two cotyledons. You can say seed leaves. The radicle of the embryo develop into a new root while the plomule develops into new shoot. The embryonic stem above the point of attachment of cotyledon is called epicotyle and the embryonic stem below the point of attachment is called hypocotyle. Third is called endosperm tissue. In angiosperms,
The angiosperms mean flowering plants. In angiosperm, the stored food is derived from the endosperm tissue. This tissue rich in oil or starch and protein. Endosperm tissue is rich in oil or starch and protein. In many seeds, the food of the endosperm is absorbed and stored by the cotyledon. You can see here, this is the endosperm tissue, or endosperm tissue contains stored food. Sometimes these cotyledons absorb and stored the food of endosperm tissue. एंडोस्पर्म टिश्यूज ये फूड से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर स्टोर कर लेते हैं, और फिर ये किसको प्रोवाइड करते हैं? टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. और ये देख सकते हैं, दिस इज द एम्ब्रियो, और ये है एंडोस्पर्म टिश्यू. आउटर कवरिंग, दिस इज कॉल्ड सीड कोट. और ये जो है ओवरी वॉल डेवलप इनटू फ्रूट. आपने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ सीड. In structure of seed, we have discussed the three distinct parts of seed. First is the embryo formed from zygote. Second, the endosperm tissue formed from endosperm nucleus. And the third, the seed coat, which develops from the wall of ovule, which is also called as integument. इसके बाद जो ये stored food है, this stored food may be oil, starch, and protein. The form of the stored nutrients in the seeds varies depending on the kind of plant. ये वेरी करता है, different plants में different kinds के storage होती है, like oil, starch और protein. तो ये किस पे डिपेंड करता है, क्या चीज स्टोर है इसके अंदर एंडोस्पर्म टिश्यू में? It depends upon the form of the stored nutrients in seeds depends upon the kind of plant. इसके बाद here is your assignment. First, what is seed coat? Only write down the seed, what is seed coat. And second, give the difference between epicotyle and hypocotyle. मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताया what is epicotyle and what is hypocotyle. Give only one difference between epicotyle and hypocotyle. Thank you. Allah Hafiz.